Welcome to the series of lectures Physics. Once again, we are discussing circular motion, an example of two-dimensional motion, and all the related videos are being uploaded on my YouTube channel, Grand Physics. So you can go to the YouTube, search my channel Grand Physics, search the topic, and learn the concept of physics from there. In today's class, we shall discuss about the velocity and acceleration in two-dimensional motion. Circular motion is also an example of two-dimensional motion. So we shall see when we say the direction of velocity in two-dimensional motion or a circular motion is always along tangent. So can we prove that? Yes, we can prove that. And we talked about the acceleration in circular motion, and we saw that there are two types of accelerations there. One is centripetal acceleration, that is directed always towards the center, along the radius towards the center, and that is responsible for rotating the particle in a circular path. So if a circular path is being maintained by any particle, there must be some cause which will be able to act towards the center along the radius, and that is nothing but that force, or the resultant of all these forces are known as centripetal forces, and acceleration is centripetal acceleration. But there is another kind of acceleration which is tangential acceleration. Tangential acceleration means acceleration which is directed along the tangent, and we have learned that the direction of velocity is also along the tangent. So we can say that there is a component of net acceleration which acts along the velocity or along the tangent. So we shall discuss mathematically all these things in this class. So let's see how we can achieve that. Let's suppose a circular path. Suppose this be a circular path, and we denote it as y-axis, x-axis as usual, and suppose at any instant of time the particle is at this position P. So this is the radius R, and suppose if it makes an angle theta, so the position vector of P will be written as r cos theta into I plus r sin theta into j. So what we can write from here, if we write the position vector of P, means what we are discussing, direction of velocity in 2D. Direction of velocity in 2D मोशन, टू डायमेंशनल मोशन. सो जैसा नाम ही बता रहा है टू डायमेंशनल मोशन, मतलब इसको डिस्कस करने के लिए हमको एक प्लेन की जरूरत होगी, या ऐसे कहूं कि इसको डिस्कस करने के लिए दो एक्सिस की जरूरत होगी. तो यहां भी हमने देखिए कि एक्स वाई प्लेन ले लिया, एक एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है, एक वाई एक्सिस को डिनोट कर रहा है. अगर ये एंगल थीटा है तो ये इसके तरफ हम लोगों ने इसको ई आर, एक यूनिट वेक्टर का नाम दिया था, और इस तरीके से ये थीटा तो यह भी थीटा. तो आर का एक कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा. तो पोजीशन वेक्टर को आप कैसे डिनोट करेंगे, इस आर वेक्टर को यदि मैं डिनोट करना चाहूं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी कैसे डिनोट करेंगे, आर से. आर वेक्टर को कैसे लिखेंगे, आर इसका मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे.
We can write that r cos theta in x direction, so I y direction r sin theta, so it is j. So now if we want to find out the velocity, how we can find out the velocity? We know that v will be defined as dr by dt, means what? D, take r, dr, r we have taken common from here, cos theta I plus sin theta j by dt. What it will be? R is constant, the magnitude of this part r is constant, so it is outside of this differentiation. And what we can write? Differentiation of cos theta is minus sin theta and d theta by dt plus sin theta, differentiation of sin theta is cos theta d theta by dt into j. So now d theta by dt is what? Omega. So r d theta by dt will be out of this, minus sin theta I plus cos theta into j. What we can write? R omega minus sin theta I plus cos theta j. Now you can see that we have written what? V. This is also a unit vector. This is also a unit vector, minus sin theta I plus cos theta j. But we see that r omega is what? R omega is the speed, means magnitude, velocity, magnitude of velocity. So what we can write from here? V equals to V, r omega is equal to V, minus sin theta I plus cos theta into j. This will be the expression of V. We shall write here. What is our R? R equals to R cos theta I plus sin theta j. And what is V? R omega minus sin theta I plus cos theta j. So, if we see from here, now remove all these things. We have written that part. If we see from here, what is the direction of R? This is the direction, cos theta I plus sin theta j. We shall denote it as ER. This is a unit vector along this direction. And what is the direction of V? Minus sin theta I ET. Let's suppose this is ET. So ER equal to, what we are going to do, we want to take ER, we have considered ER the unit vector in the direction of position vector of R. So cos theta I plus sin theta j is a unit vector because its magnitude is 1. Under root cos square theta plus sin square theta will be 1. And in the same way, sin theta minus sin theta I plus cos theta j, it's also a unit vector because its magnitude is always 1. So these two are denoting the direction only. Magnitude is 1, this will be called a unit vector. So ER and ET both are unit vector. So we see that ER and ET are unit vectors. So what we can take? ER equal to cos theta I plus sin theta j, and ET what we have considered?
माइनस साइन थीटा आई प्लस cos theta j. Now, if you take the dot product of ER and ET, what will you get? Cos theta into sin theta with minus sin I dot I will be 1 plus sin theta into cos theta means cos theta into sin theta, and j dot j will be 1. So what we can get? Minus cos theta sin theta plus cos theta sin theta, it will be 0. From here we can write ER dot ET equals to 0. Means what? ER is perpendicular to ET. Because if the dot product of two vectors is 0, both vectors are perpendicular to each other. It means R and V are perpendicular to each other. Means R is perpendicular to V. So if R is perpendicular to V, R is along the radius, or we can say the normal direction. R is the normal direction, that is, and its perpendicular is always a tangent. So we can show here that this is our ET, and ER and ET both are perpendicular to each other, and ET is where? Along the tangent. So it means velocity is along the tangent. So velocity is along tangent. और यही हम प्रूव करना चाह रहे थे कि यदि कोई भी पार्टिकल टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन भी टू डायमेंशनल मोशन का एक एग्जाम्पल है, तो वह पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वह किसी भी पॉइंट पे उसके टेंजेंट के अलाउंग होने वाला है. करेक्ट. तो इस तरीके से हम लोगों ने वेलोसिटी की इस कॉन्सेप्ट को सीखा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होने वाला है. तो अब यहां से हम एक्सीलरेशन की एक बात करेंगे जिसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बताएंगे. तो हम लोगों ने क्या देखा था, जब एक्सीलरेशन सर्कुलर मोशन में पढ़ रहे थे, तो एक्चुअली एक्सीलरेशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होगी. तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो किधर है? टेंजेंट के अलाउंग, और टेंजेंट हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा. इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा, यहां पे ऐसे करेंगे, डाउनवर्ड्स होगा. तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन है वह ऑलवेज क्या करता है? चेंज करता है. इस तरीके से इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे. तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंजेज ईच एंड एवरी पॉइंट पे है. अगर ये सर्कुलर मोशन में है तो हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसके डायरेक्शन में क्या हो रहा है? चेंजेज हो रहा है. तो उस चेंज के कारण भी एक एक्सीलरेशन आएगा. तो वेलोसिटी में डायरेक्शन के चेंज के कारण जो एक्सीलरेशन आया था, वह एक्सीलरेशन, अब इसको भी मैं हटा रहा हूं, वह एक्सीलरेशन किधर आ रहा था? ये सर्कुलर मोशन में होगा तभी पॉसिबल है. तो यह एक्सीलरेशन आता है, इसको ए आर हम लोग नाम देंगे, इसको बोलेंगे रेडियल या एसी भी बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन. तो अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, इसका मतलब है कि उसके सेंटर के तरफ एक फोर्स तो काम कर ही रहा है, उसमें कोई डॉट नहीं है. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हर जगह पे क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है. और सर्कुलर मोशन में वो है अगर ये पार्टिकल, तो उसके सेंटर के तरफ एक फोर्स लग रहा है जो कि उसको सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन दे रहा है. अगर दे रहा है तभी वो पार्टिकल उसको मेंटेन कर रहा है, अदरवाइज वो सर्कुलर पाथ को मेंटेन नहीं कर पाता. तो अगर वो कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है
तो उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वह ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या होते जा रहा है, चेंज हो रहा है. तो ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वी हैव एन एक्सीलरेशन which is directed towards the center along its radius and that is known as the radial or centripetal acceleration. इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सीखा है. अब क्या है कि अगर उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी साथ में चेंज करे, डायरेक्शन तो ऑलवेज चेंज कर रहा है, अगर उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज करे तो क्या सिचुएशंस बनेगी. तो देखते हैं, वेलोसिटी को, ये टू डायमेंशनल मोशन है. टू डायमेंशनल मोशन है तो हर जगह वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा, ऑलवेज होगा उस पार्टिकल का. तो अगर हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की टर्म में लिखेंगे इसको, तो अब इसका नाम हम लोग क्या देंगे, इसका नाम देंगे हम लोग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में हम लोग क्या प्रूव करना चाहते हैं कि इफ वी टॉक अबाउट द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन मींस नेट एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन अलोंग द वेलोसिटी. इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि कंपोनेंट ऑफ the component of net acceleration along velocity. इसको ऐसे डिफाइन करेंगे हम लोग कि एक्सीलरेशन होगा उसके कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है. कैसे होता है, अगर इसका मैथमेटिकल प्रूफ आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं. हम v को कैसे लिखेंगे, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है ये टू डायमेंशनल मोशन में एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट होगा इसका. तो यहां से यदि आप ए निकालना चाहेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं. ए इक्वल्स टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी, और अगर इसको निकालना है डी वी बाई डी टी तो क्या हो जाएगा, डी वी एक्स बाई डी टी इंटू आई प्लस डी वी वाई बाई डी टी इंटू जी. यहां से आपको वेलोसिटी मिल गया और यहां से आपको एक्सीलरेशन मिल गया. तो मैं नोट करके यहां रख लेता हूं इसको कि v को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया है, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, और एक्सीलरेशन कितना आया, डी वी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वी वाई बाई डी टी इंटू जी. अब इस दोनों टर्म को हम हटाते हैं और देखते हैं कि क्या आता है यहाँ. अब हम निकालना क्या चाहते हैं कि कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग वेलोसिटी. तो कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि ए डॉट भी, ए डॉट भी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ भी, यही होगा. तो ए डॉट भी कितना होगा, वी एक्स डीवी बाई वी एक्स इंटू डी वी एक्स बाई डी टी आई प्लस वी वाई डी वी वाई बाई डी टी इंटू जे बाई mod of v. Mod of v means under root vx square plus vy square. vxi plus vyj. What will be the modulus of v? Means magnitude of v will be v square vx square plus vy square under root. So that is here. So we can write this as equation 1.
suppose. That is fine. So now if you, this is what? This is component of net acceleration along velocity. What we have calculated? Component of net acceleration along velocity, and that will be Vx dvx by dti plus Vy dvy by dtj by under root Vx square plus Vy square. That is fine. So now what is the magnitude of V? If we want to find out the magnitude of V, so mod of V, what will be? Under root Vx square plus Vy square. And now if you want to find out the value At, what will be At? D Vx square plus Vy square under root by dt. So calculate this. What will be this? 1 by 2 1 by 2 into under root Vx square plus Vy square into 2 Vx and dvx by dt plus 2 Vy dvy by dt. That is acceleration. So you can see that 2 from here will get cancelled. What is the value? Vx dvx by dt plus Vy dy by dt. So what we can write from here? At equals to, now you can write from here, what is At? At equals to Vx dvx by dt plus Vy dvy by dt by under root Vx square plus Vy square. Now remove this also. This will be equation number 2. So we see that from equation 1 and 2, see A dot B by V and At is equal to each other. A dot V by V is Vx dvx by dti plus Vy dvy by dtj by Vx square plus Vy square under root, and At is also the same. So equation 1 and 2, equation equation 1 and 2 are equal. दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है. It means At is nothing but A dot V by mod of V, which means component of A along V. Means remove these things and write down. This means what? Component of A along B. And it is proved. So this actually we were trying to prove that in a circular motion, if the speed is also changing, if speed is constant, speed is not changing, there is only one acceleration, that is known as the AR, or we can say that AC, that is centripetal acceleration always. So centripetal acceleration is always due to change in the direction of the velocity. And tangential acceleration is what? The component of A, means component of net acceleration towards B. So what we can see from here? We can see from here, this is our A. So this will be AR, and in this direction it will be AT. So one is along the radius
and another is along the tangent. So acceleration has two parts always. The net acceleration has two components. One is along the radius. What we can say that acceleration is centripetal acceleration. And one is tangential acceleration, which is due to the change in the speed of the particle, magnitude of velocity of the particle. So what we can conclude from here, the acceleration has two components. Acceleration in circular motion, acceleration in circular motion, acceleration in circular motion, suppose A has two components. One is centripetal and another is tangential. This is why, due to change in direction of velocity, and this is what? Change in magnitude of velocity. Fine. So that is the learning from this class. This video will be uploaded to my YouTube channel Grand Physics. So you can go to the Grand Physics and learn the concepts of physics on some topics. We are presently discussing circular motion. We have discussed some aspects of circular motion that is useful for preparation of engineering and understanding some conceptual points. Now in next class we shall start solving some problems on the concept which we have already learned till now. So thank you for attending this class. Go and see the lectures.